ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज कपलिंग। अब कपलिंग में क्या हो रहा है, अब हम यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं कि एक फॉस्फर एमिटाइट monomer is added in the presence of an activator such as tetrazole, a weak acid that attacks the coupling phosphoamidite nucleotide forming a tetrazole phosphoamidite intermediate. This structure reacts with the hydroxyl group of the recipient and the 5' to 3' linkage is formed. ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन जो उसका नेक्स्ट स्टेप है, अब उसमें देखिए क्या है कि हमने कोई एक एक्टिवेटर ऐड किया। एक्टिवेटर क्या है, एक्टिवेटर वीक एसिड है। हमने पढ़ा था अभी अभी कि जो आपका 3-फॉस्फोएमिटाइट है वो रिमूव हो सकता है या वो रिएक्शन वापस हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है अगर हम वीक एसिड डाल दें। तो यहाँ टेट्राजोल एक वीक एसिड है जो कि कपलिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये इसका क्या काम है, इट बेसिकली इज गोइंग टू अटैक द फॉस्फेरेमिटाइड न्यूक्लियोसाइड, इसको जाके ये अटैक करता है इसको। ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को जब जाके अटैक करता है तो क्या होता है, इट फॉर्म्स अ टेट्राजोल फॉस्फोरेमिटाइड इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, and this structure then reacts with the hydroxyl group of the recipient. अब यहाँ पर मान लीजिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिसिपिएंट का है, ये वाला, ठीक है। हमारे पास let us say this is base 1 and this is our base 2. ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये बेस 2 है, ये बेस 1 है। ठीक है बेटा, बेस 1 नीचे चला गया जिसके साथ ये बॉल लगी हुई है, ओके, एंड बेस 2 जो ये एक्टिवेटर के साथ है ये ऊपर आ गया। देखो हमने इसके OH को नहीं छेड़ा है, दिस इज स्टिल DMT is attached to it, but why it has gone up is because this OH is available now. Both of them they react and they lead to the formation of this tetrazole phosphoremitide intermediate, this intermediate, okay. So this is called as coupling reaction. तो यहाँ पर कपल होता है, दो रिएक्शंस का आपस में, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Now the next part is the oxidation reaction. If you see here, the next part is oxidation reaction. Oxidation में क्या हो रहा है कि stabilizes the phosphate linkage in the growing oligonucleotide. The traditional method of achieving this by the treatment with iodine in water. ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट लिंकेज है यहाँ पर, अगर ये अनस्टेबल है तो इसको हमने क्या करना है, स्टेबल करना है। सो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3। Okay, I would want to show you another picture so that the things become more clearer to you. Okay, if you see here in this reaction, आप ध्यान से देखो बेटा इस रिएक्शन में कि यहाँ पर आपका एक्टिवेशन हो गया, इसका ये इसके साथ जाके लग गया। आपको बताया था OH ग्रुप है, ठीक है, डी ब्लॉकिंग के बाद, एंड देन यू सी दैट कि यहाँ पर एक्टिवेटिंग और कपलिंग रिएक्शन हो रही है, एंड दिस बेस 2 गोज अप एंड दिस बेस 1 गोज डाउन एंड दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस। ओके, नाउ सी हियर 1 2 and 3, दिस इज द थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉस्फोरस। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि द P3 स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू P5 स्टेट, लेकिन हमको न्यूक्लियो ओलिगोज में क्या चाहिए, हमको P5 स्टेट चाहिए। तो क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कैन यू सी 1 2 3 4, ये फॉस्फोरस जो है डबल बॉन्ड बना रहा है एक OH के साथ। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके। तो इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम P3 स्टेज टू P5 स्टेज, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो गई यहाँ पर। सो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड।
Nothing more is happening. What is happening over here is that the P3 oxidation state is getting converted into P5 oxidation state during this chemical reaction. Okay, and this increases the stability of the oligo. ठीक है, ये oligonucleotide की stability को increase करता है. ठीक है, अब ये जो method है, ठीक है, this process keeps on continuing. I'll go back. So this is exactly happening over here. Is that यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये इथाइल अमीनो ग्रुप ऑलरेडी अभी भी अटैच्ड है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से क्या हो गई, इनकी 5 हो गई. दैट्स द डिफरेंस. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? The next step is capping. What is capping? The final step of synthesis of cycle is capping reaction. Any remaining 5' hydroxy group are blocked at the capping step of in an irreversible process. ओके, दिस स्टेप प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड विद मिसिंग बेसिस. इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल में से कई बार ऐसा हो जाता है एंड समटाइम इट हैपेंस दैट देयर इज अ मिस एंड देयर आर सम न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच ऑफ whom the OH group is not involved in the formation of this bond, then those molecules will be again capped by, okay, so they will be blocked by a process called as the capping. It is not a protecting group, it is a different group, different from that of the protecting group, and this process is called as capping. So first is deprotection, then is coupling, then is capping. Okay, any molecule which has remained and any OH group at 5' position which has not reacted with will be capped, and then the next step, that is the fourth step, will oxidation will take place. And then this process will keep on going again and again till the molecules are added. Okay, till the molecules are added means till the oligos of the desired length are synthesized. So this is again a representation, and you can see that this process is repeated again and again. Okay, so for here phosphorus, हम इसको इसलिए दिखाते हैं यहाँ पर इस फॉस्फोरस को. आप ध्यान से देखिए कि इनिशियली ये वाला फॉस्फोरस जो है अब नीचे की तरफ जो आ गया है, इट हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोस. किस में कन्वर्ट करते हैं? द मेथड विच इज कॉल्ड एज, so the phosphorus here, remaining phosphorus, has not been converted into phosphoramidite. Therefore, the next step will be addition of that group here. Okay, therefore in this picture it is causes, in this picture, sorry, let me go back. So there will be repetition, that means addition of the further group will take place, and then there will be deproduction. Okay, so these are the 4 steps. That is why we say that the process of oligonucleotide synthesis, it involves 4 main steps. One is deprotection, then is coupling reaction. Okay, apart from coupling or activation, then oxidation and capping, or capping and oxidation. The numbering can be in any manner. So this is beta ji how the oligonucleotides, they are synthesized by different companies, and this picture here gives you a glimpse of the first commercially available DNA synthesizer which were developed in Canada, McGill University, in 1981 for the synthesis of DNA and RNA oligos. And this again gives you a glimpse of the evolution of the various oligo synthesizers over the years, starting from this ABI 3 oligo synthesizing per run synthesis, 4 oligo, okay, then 48 oligosynthesis per run, then 192 oligosynthesis per run. So that means the technology evolves with every passing day, and it is still evolving, and there are instruments which are being synthesized for their synthesis.
Okay. Now, the last part of this oligonucleotides purification synthesis is that once the primers or oligos are synthesized, the next step is that they must be purified. So whether your oligo requires purification or not, it depends on your usage. आपने उसको use किसके लिए करना है? अगर आपकी molecular biology की कोई भी टेक्निक है वो बहुत sensitive है, results are very sensitive and you cannot go away with the impurities, then you must purify your oligonucleotide synthesized by the oligosynthesizer. But if you are standardizing something and you do not actually you do and you are not clear about whether this will be the oligo which is required or something else is required, then you can play without even purifying the oligos. The process by which the oligos can be purified can be divided into different categories, or they are of different types. The most common method is precipitation, wherein the direct precipitation of nucleic acids is carried out, and जो भी बचा हुआ chemical molecule है, that is removed during this process. Another is by size exclusion chromatography, wherein special columns are designed for the purification of the oligonucleotides. Okay. Similarly, we can have reversed phase cartridges. Reverse phase cartridges may, so a hydrophobic matrix is there which can be used for the separation of the different chemical molecules from the mixture. Similarly, denaturing page and HPLC can also be carried out. I'm not going into details, even you do not have to go into the details. And I will be attaching a paper in which the details of all these purification methods are given. But I think it is just for your information. You don't have to go in details. It will be overwhelming for you. Okay. So this is all about the oligonucleotide synthesis. With this, I have finished with the primer design and the oligonucleotide synthesis. The last topic which is left is that of the site-directed mutagenesis that I will convey shortly. My request, dear, is that kindly go through these presentations, and these are equivalent to your notes. I think the data that I have given is sufficient enough. इससे ज़्यादा data you won't be getting, neither you will be able to assimilate it. Okay, so kindly go through it. और अभी तक I have not gotten a response. ये माइक्रो एरे की स्लाइड मैंने इसीलिए देखी थी that I have not gotten a response कि I had shared you links of DNA microarray analysis and but nobody has actually responded to me. मैंने EPG पाठशाला के notes आपसे share किए थे, web links भी share किए थे, but I have not received any response. Kindly give me response. If you give response, I do get motivated कि at least class में मैं जो कर रही हूँ बच्चे देख तो रहे हैं उसको. But unfortunately only 5 or 6 students they keep on responding to me, so it is very disheartening. You are 41 students, up to 42 students हो गए in my Google Classroom, and even only when 5-6 people, maximum 11 people respond, it is very disheartening. So kindly do respond. Thank you.